ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. Focus, ideate, innovate, enable. Ladies and gentlemen, we welcome you very, very warmly to the GJF National Jewelry Awards 4th edition. The awards have been instituted by the All India Gems and Jewelry Trade Federation, GJF, a tribute to excellence and ode to craftsmanship. ये अवार्ड्स रत्न तथा आभूषण की दुनिया के सितारों को उनकी असली पहचान है। Absolutely. So, Swagatam Dosto. It's wonderful to be here this evening among the true stars and the real jewels of the gems and jewelry industry. So, welcome once again to our Jashan, our celebration of your efforts and your achievements. GIF National Jewelry Awards 2014 is presented by the International Gemological Institute, powered by Malka Amit JK. We are grateful to our associate partners, Nazrana, the Diamond Gift, and the World Gold Council. Our supporting partner, Forever Mark. Our process validation partner, RSM Astute Consulting. And last but not the least, our media partner, CNBC आवाज। Ladies and gentlemen, समय आ गया है कि हम इस मंच पर आमंत्रित करें एक ऐसे व्यक्ति को who's soft-spoken, dedicated, and greatly esteemed by the entire industry. Put your hands together to welcome the chairman of the 4th GIF National Jewelry Awards, Mr. Nitin Kadam. On behalf of All India Gem and Jewelry Trade Federation, I extend very warm welcome to all of you for the part of National Jewelry Award 2014. The NJA Awards are the most prestigious awards in the gem and jewelry industry to recognize the great skill, talent, innovation, and creativity of our industry. National Jewelry Awards are our industry's recognition from the industry, by the industry, to the industry. The first set of award comprises of 4 different segments and 26 categories. The 4 different segments are Retailers Award, Manufacturer Award, Jewelers Award, and Student Award. The Jewelers Award shall be selected by an assessment procedure drawn by the very specialized jury constitute of experts who merit in the specialized aspects of the craftsmanship, design, innovations. National Jewelry Award, Student Awards for jewelry are open for students presently studying in the Gem and Jewelry Institutes. There are special awards to encourage the young talent in the jewelry industry. In fact, GJF shall be awarding scholarship worth rupees 15 lakh to the award winner student. We have with us here a distinguished juries panel who has put in their best effort and experience in judging the jewelry pieces. Among other who gave us their valuable input and drive the award result today. Thank you. Thank you, Nitin ji. समय आ गया है मंच पर एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करने का who is always been dynamic, determined और इस इंडस्ट्री में उनका बहुत बहुत आदर है. The chairman of GJF, Mr. Haresh Soni. Friends, our trade federation is unique. It is indeed unique in many ways. It is the single largest trade body featuring manufacturers, wholesalers, retailers, laboratories, artisans, designers, allies, etc. in big numbers across the country. Friends, today we have gathered here to celebrate achievements. NJ has
galore of awards to be given in a different categories. And let me tell you that all these awards are an icon in our industry and considered most priceless and prestigious in this industry. As we all know that there is no competition with India when it comes to handmade jewelry. We have immense potential in gems and jewelry industry and which needs to be recognized and encouraged. And the best part of NJ is that we are encouraging and promoting art in jewelry. Overall, it is a platform that encourages talent in the industry. Friends, I must also acknowledge that NJ has been pivotal to the success GJF, and so a big thank you to all the participants who have made this award ceremony a great success. Thank you so much. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। पाई पाई जोड़कर बनता है एक सपना, सपना जिसे आप कहते हैं अपना घर। पर प्रोजेक्ट्स की इस भीड़ में कहां मिलेगा सही कीमत पर घर? प्रॉपर्टी में निवेश तो कर दिया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि इसे बेचें कब। उलझन भरा है देश का प्रॉपर्टी बाजार, जिसे समझना नहीं है आसान। प्रॉपर्टी बाजार की इस भूल भुलैया में आपका साथ देंगे हम, देश के सबसे भरोसेमंद प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के साथ। सेरा प्रेजेंट्स प्रॉपर्टी गुरु, सिर्फ CNBC आवाज पर। प्रॉपर्टी गुरु के प्रस्तुत करता है सेरा रिफ्लेक्स माई स्टाइल। प्रायोजक है 99acres.com। It's beautiful. Ash brown. It's so elegant. Ash brown. It's charismatic. Ash brown. Ashbra Diamond Jewelry, a reflection of your emotions. Ash brown. क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस, कैश डिपॉजिट्स, बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। From PC Chandra Jewelers. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation.
Ladies and gentlemen, we now move close to announcing the winners in various categories of awards. Best Unique and Innovation Promotion of the Year. That's right, ladies and gentlemen. And इस award को present करने के लिए हम stage पर बुलाना चाहेंगे Mr. Bhupendra Popat, Mr. Ashok Vastani और जयपुर Association के Mr. Vijay Kedia को. Very, very good evening, gentlemen. Very surprised that this prize is going to be tie, and it is going to tie between L. Gopal and Sons Guwahati and Sumit Gems and Jewelers, Raipur. Thank you, gentlemen. हमारा अगला अवार्ड है Best Advertising Campaign of the Year, Audio Visual. और विजेता को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर वीरेंद्र सागर, मिस्टर प्रतीश पोपट एंड मिस्टर मुकेश जाखिया. And we'd like to take a look at the nominations now. Winner for the Best Audio Visual Advertising Campaign of the Year is NAC Jewelers Private Limited, Chennai. हमारा अगला अवार्ड है द बेस्ट सिंगल स्टोर ऑफ द ईयर नॉर्थ. मैं इस पुरस्कार को देने के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री प्रदीप कोठारी जी को और श्री शैलेश संघानी जी. We take a look at the nominations. It is Hazuri Lal Jewelers and Sons. Thank you, sir. Congratulations. The award for the best single store of the year, West. मैं आमंत्रित करना चाहता हूं रमन सोलंकी जी को और जतिन छेड़ा जी को मंच पर आएं और विजेता को सम्मानित करें. And now we take a look at the nominations. The winner for the best single store of the year, West, is Chintamani, the Jewelry Arcade, Mumbai. Ladies and gentlemen, our next award is for Best Retail Chain of the Year. At this point, I would request Mr. Siddharth Savansukh and Mr. Prabir Chatterjee to come up on stage and award the winner. Award goes to Malabar Gold Private Limited. Thank you very much, gentlemen. Requesting Mr. Chatterjee to please stay on stage and talk about the Trustmark initiative. GJ's first of its kind Trustmark model for India's jewelry manufacturers, traders, and jewelers, a unique business excellence model. The initiative that will help GJF fraternity to grow their business and achieve and become more efficient and excel in their business. The Trustmark is an exclusive model for business growth through implementation of systems and processes and practices for growth and managing risk in exclusively designed gems and jewelry industry. Trustmark model is focused on all business aspects, that is strategy, resource management, people, infrastructure, and security, quality management, customer service, delight,
vendor management, performance management, promote environment, health, and safety, to define strategy, to adopt a roadmap using their own business goals and milestones. It helps in defining organizational priorities and best practices approach. It exists in risk analysis, assessment of evaluation of business risk, financial risk, brand and reputation risk. It also helps formulate mitigation plans. It helps assess a formal mechanism to understand customer needs, defining and monitoring customer satisfaction matrix, customer grievance handling, mechanism, and CRM. It creates awareness of regulations and monitoring compliance. In short, Trustmark is, being a Trustmark compliant, is being a company that is one whole standardized company. Company profiles. Now, the first 3 companies to be awarded the Trustmark certificates are Chheda Jewels, Mr. Jatin Chheda from Mumbai, Premji Walji and Sons, Mr. Harish Soni from Rajkot, Khandelwal Jewelers Akola Private Limited, Mr. Nitin Khandelwal, Akola. I think they require a big round of applause for supporting the Trustmark program and being Trustmark compliant. We have received over 100 applicants for this program. And I here request all members of the jewelry fraternity to be Trustmark compliant. Thank you. Today we are giving away awards to the most deserving students who presented their jewelry designs that have been selected by the jury. The idea is to promote skill and the youth of the country who have the talent and inclination towards jewelry, where their current hobbies may turn into a productive profession. GJF has initiated a contribution towards a scholarship for all the students of 15 lakhs for further studies. A big round of applause, ladies and gentlemen. To give away the certificates and check, I'd like to call on stage Mr. Ashok Meenawala, Mr. Prem Kothari, and Mr. Gaurang Popat. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our 10 student award winners. From the North Zone, it's Neha Verma, IIGJ Delhi, and Nidhi Agarwal, IIGJ Jaipur. वुमन तो हमने सोचा क्यों ना हम सारे ज्वेलरी पीसेस को शोकेस करें ऑन ब्यूटीफुल वुमेन. So time now for the nominees, and we're going to show the nominees in a slightly different way here. This is the category, ladies and gentlemen, Best Jarrao Jewelry of the Year, Precious Stones, and we're going to show it to you in the form of a fashion show. First up, Anmol Jewelers, Mumbai. The nominees for the Best Jarrao Jewelry of the Year, Precious Stone, are Anmol Jewelers, Mumbai, Prasala Jewels Private Limited, Hyderabad, Shobha Shringar Jewelers, Mumbai, Sri Raj Mahal Jewelers Limited, New Delhi, Sri Raj Mahal Jewelers Limited, New Delhi, And now the three distinguished gentlemen to come and share the stage with the gorgeous girls, Mr. Ramesh Narang, Mr. Mukesh Mehta, and Mr. Vipul Sutaria.
Can we have you on stage, gentlemen? The award goes to Sri Raj Mahal Jewellers, Delhi. Congratulations and a big thank you to our presenters. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. Manikchand Jewelers. Manikchand Jewelers. सही प्रोडक्ट, सही सर्विस और सही दाम, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। और अब ये आवाज होगी और भी बुलंद, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो या ब्रांड। अब हम लेंगे कंज्यूमर के साथ लापरवाही बरतने वाली हर कंपनी की खबर पहरेदार बनकर। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। ये आपके लिए मॉम। थैंक यू। दादी ये आपका। नीना जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल ना। थैंक्स सेठ। चाय ठंडी हो रही है। हाँ। प्लीज। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। नजराना। हेलो यंग मैन, बार बोर्ड नहीं देखा क्या? वो ये पेंशनर क्लब है। जी मैंने भी पेंशन का प्रावधान किया है। मैंने LIC की जीवन अक्षय 6 में निवेश किया है। ये है सिंगल प्रीमियम इमीडिएट एन्युटी प्लान, जिसमें पेंशन भुगतान के 7 ऑप्शंस हैं। और हाँ, चेक एंड मेल। LIC का जीवन अक्षय 6, पे वंस, एंजॉय फॉरएवर। IRDA clarifies to public that IRDA or its officials do not involve in activities like sale of any kind of insurance or financial products nor invest premiums. IRDA does not announce any bonus. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint along with details of phone call number. From PC Chandra Jewelers. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. अगला अवार्ड है बेस्ट जड़ाऊ ज्वेलरी ऑफ द ईयर नॉन प्रेशियस स्टोन्स and to present this award I'd like to welcome on stage firstly Miss Shefali Patel, our esteemed jury member, and Mr. Sumit Anand. And let's now take a look at the nominations in this category.
Undoubtedly, Shri Rajmahal Jewellers. और अब आगे बढ़ते हैं to our next award, Best Jarao Jewelry Design of the Year. विजेता को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर तेहमा प्रिंटर, मिस्टर नितिन खंडेलवाल एंड मिस्टर अंशु गांधी. Goes to Navratna Jewellers Private Limited, Bangalore. Now, ladies and gentlemen, हमारा अगला अवार्ड है Best Platinum Jewelry Design of the Year. विजेता को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं पल्लवी जी को ऑफ प्लैटिनम गिल्ड इंडिया, सुमेश वधेरा, AOJ Media, and Mr. Sachin Jain. Let's take a look at the nominations. This Platinum Jewelry Design of the Year award goes to Unidesign Jewelry Private Limited. Our next award is for the Best CZ Jewelry Design of the Year. अब मैं चाहूंगा कि श्री वसंत बिरावत, श्री राजेंद्र जैन ऑफ सिग्निटी और श्री सब्यसाची रे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर GJEPC, मंच पर आए, अवार्ड घोषित करें और विजेता को सम्मानित करें. Can we take a look at the nominations, please? And the winner is DM3. Ladies and gentlemen, our next award is for Unique Jewelry Design of the Year. May I call upon Mr. Vipul Shah, Chairman, GJEPC, Mr. Chetan Thadeshwar, and Mr. Premjit Sengupta of Rio Tinto. Please come up on stage, do the honors. And ladies and gentlemen, the nominees for Unique Jewelry Design are And the winner is Anmol Jewellers, Mumbai. Now it's time for some very special awards, right, Pranit? Yes, to award those people and personalities who have made a significant contribution to the industry over the years. ये मंदिरा, this is called the Gem of the Year Awards, जो हम region wise घोषित करेंगे. जी हाँ, शुरुआत करते हैं with Gem of the Year North. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Mr. Mahesh Jain. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. शादी के बाद पहली बार घर जा रही हूँ. भी ना चला क्यों जिंदगी का सिलसिला और फिर अचानक कुछ हुआ. यूं ही चलता चला. अरेंज्ड मैरिज या जो कह लो, हमें मिला अपना डे ऑफ लव. प्लैटिनम, रिश्ता दिलों का,
साथ रहे हमेशा। मेरा प्यार मिल गया। There is more to be done by the government to encourage the private sector. कोई नेशनल पार्टी नहीं, मल्टी स्टेट पार्टी। जाति के आधार पे वोट देना या टिकट देना, हम इससे दूर नहीं हो सकते, भाग नहीं सकते, हट नहीं सकते। Every sector is going through pain. Every sector is going through a demand slowdown. कितना कॉन्शियस होना चाहिए कि देश में और क्या हो रहा है। गांव में रहने वाले एक बच्चों प्रेसिडेंट बन सकता है। जब देश के सबसे जाने माने लोगों को कहनी होती है अपनी बात, तो वो चुनते हैं CNBC आवाज। देखिए संजय पुगलिया के साथ खास मुलाकात। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल साबुन। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं, हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। It's beautiful. Ash brown. It's so elegant. Ash brown. It's charismatic. Ash brown. Ashbra Diamond Jewelry, a reflection of your emotions. Ash brown. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. And now, ladies and gentlemen, we move to the Gem of the Year award for the Central East. I would like to invite Mr. Samar Kumar De come up on stage and receive this prestigious Ladies award. and gentlemen, a big round of applause for Gem our of Gem the Year, Central Central East. The next award for the Gem of the Year, West Zone, ladies and gentlemen. Dr. Patel, may we have you up on stage. Thank you, gentlemen. Congratulations, Dr. Patel. Time to move to the next award, the Gem of the Year, South Zone. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. P.V. Jose to come up on stage and accept the award. Time to move now to the Paramparik Jewelry Awards. Our first award in this category, Best Paramparik Jewelry North. विजेता को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं श्री रंजीत कपूर और श्री रमेश धवनाम। The award goes to Hari Prasad Gopi Krishna Saraf, Gorakhpur. Let's move to Paramparik Jewelry of the Year, Central East. To do the honors, may I welcome on stage Mr. Pradeep Kothari and Miss Beena Aziz, our esteemed jury member. Now, ladies and gentlemen, let's take a look at the nominees.
Savan Sukha Jewellers Private Limited. Savan Sukha Jewellers Private Limited. Now moving from the Central East to the West, Paramparik Jewelry of the Year, West. And to present the award, we'd like to invite on stage Mr. Pankaj Parekh, Vice Chairman GJ EPC, and Mr. Pradeep Kothari. May we have the nominees AV, please. HK Jewels Private Limited, Mumbai. Time now to move to the Paramparik Jewelry Award for the South Zone. और इस अवार्ड को घोषित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री परेश शाह ऑफ PNS Jewelers एंड श्री संदीप कुलहरी. And the nominees are the winner is Krisala Jewels Private Limited, Hyderabad. our next award, Best Gold Jewelry of the Year, Bridal. Now, who doesn't like that? And once again, you're not going to be the only lady on stage, Mandira, because it's going to be showcased. The nominees are going to be showcased by the women themselves. The nominees for the Best Gold Jewelry of the Year, Bridal, are Tibbarumal's Jewelers, Hyderabad. Sri Raj Mahal Jewelers Limited, New Delhi. NAC Jewelers Private Limited, Chennai. Hari Prasad Gopi Krishna Saraf Private Limited, Gorakhpur. C. Krishnaya Chetty and Sons Private Limited, Bangalore. And now to present the award, we'd like to invite on stage Mr. Pramod Mehta of Shilpi and Mr. P.R. Somasundaram, Managing Director, World Gold Council. Goes to Hari Prasad Gopi Krishna Saraf Private Limited. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. सपनों की है रात झिलमिल तारों के साथ पास आने की घड़ी खुशियों से भरी अनोखे Heavenly Wedding Collections from PC Chandra Jewelers. वो देख रहे हैं आप ब्रिज? इसकी हाइट किसी भी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल हो सकती है। तो आपके लिए तो आसान होगा, एक रैंप पे लंबा सा वॉक करना। आज रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर।
The hill type, the Jheel type, the what a steel type. Whatever be your hotel type, get up to 60% off on the world's largest travel website. Expedia! Boom boom. सही प्रोडक्ट, सही दाम और सही सर्विस, ये हर कंज्यूमर का हक है। पर अगर कंपनीज आपका ये हक छीनती है और अनसुना करती हैं आपकी शिकायतों को, तो क्या करेंगे आप? चुप रहेंगे या लड़ेंगे? उठाइए अपने हक की आवाज पहरेदार के साथ। पिछले 7 सालों से पहरेदार दिला रहा है हर कंज्यूमर को इंसाफ। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। ये आपके लिए मॉम। थैंक यू। दादी ये आपका। नीना जी, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे आप अपनी बेटी हमें दे रहे हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल ना। थैंक्स सेठ। चाय ठंडी हो रही है। हाँ। प्लीज। हीरा देने वालों का दिल भी हीरे जैसा होता है। नजराना। It has been a challenging year for the Indian SMEs. For them, the resilience factors are actually smaller. The trade cycles just get more and more elongated, whether it's from their suppliers or from their buyers. The banks have been taking very comforting kind of an approach towards the SMEs as well. ICICI Bank Business Banking and CNBC TV 18 present the Emerging India Awards 2014. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking. Powered by CRISIL. शादी के बाद पहली बार घर जा रही पता भी ना चला क्यों जिंदगी का सिलसिला और फिर अचानक कुछ हुआ। यूं ही चलता चला। अरेंज मैरिज या जो कह लो, हमें मिला अपना डे ऑफ लव। प्लैटिनम, रिश्ता दिलों का साथ रहे हमेशा। मेरा प्यार मिल गया। Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट गोल्ड ज्वेलरी ऑफ द ईयर इन वोग। And to present this award, may I call upon Mr. K. Srinivasan of Emerald and Mr. Vipin Sharma of the World Gold Council. Can you take a look at the nominees, please? The award goes to Hazuri Lal and Sons, Jewelers Private Limited, New Delhi. Our next award, ladies and gentlemen, is Best Gold Jewelry Design of the Year. And to present this award, may I call upon Mr. Pramod Derewala, Miss Yuriko Menon, and Mr. Vijay Choradia. Have the nominees, please. Award goes to PC Chandra and Sons, Kolkata. To the next category, Best Colored Stone Jewelry of the Year. And to do the honors, we'd like to call on stage Mr. Ashok Baradia, Mr. Dilip Lagu, and Mr. Bharat Oswal. And the nominees are... The winner is
Titan Industries Limited, Bangalore. Ladies and gentlemen, it's time now for a very, very special award, the Yuva Ratna Award. Yes, ladies and gentlemen, this is a unique award that is given to young, dynamic people from the industry who've made a substantial difference by their work for the industry by the way of the Yuva Ratna of the year 2013-2014. Now, this award winner is a young Turk whose dynamism, determination and energy has helped him achieve quite a lot at a very young age. Mr. Mohit Kamboj joined the India Bullion and Jewelers Association in the year 2012 as president. From the time he joined the IBJA family, he envisioned a future where India Bullion and Jewelers Association would be on an international pedestal. He also dreamt of uniting the jewelers and traders of the association. Every step he took as president of the IBJA has been to achieve these two goals and visions. I would now like to invite on stage, amidst a lot of cheer and claps, Mr. Mohit Kamboj. DGF के वाइस प्रेसिडेंट मनीष जी, बच्चराज जी, पूर्व प्रेसिडेंट और पूरे गवर्निंग बोर्ड और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहे दिल से आज मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जब आपको हिंदुस्तान की एक सर्वश्रेष्ठ संस्था मंच पे बुला के जब आपके काम को सराहती है, वो खुद में एक गर्व फील होता है और खुद में एक बहुत प्राउड फील होता है। और आज जो मेरा एक इतने अवार्ड फंक्शंस में गया, इतनी जगह गया, लेकिन जो आज आपके हाथ से ये अवार्ड मिला, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। We're now moving to the most important award for this evening. Like I said, the Anmol Ratna Award. I would like to say this award is given to only that one person from the country whose contribution to the industry has been unparalleled. GJF is proud to announce the highest honor, the Anmol Ratna. And it is my privilege and honor to invite Mr. Arun Kaigaonkar on stage to receive this award. नमस्कार सभी जीजेएफ परिवार और उपस्थित आमंत्रित महानुभाव, पुरस्कार पाना आनंद का है, अच्छा लगता है। आज मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं जीजेएफ का बोर्ड का सबका आभारी हूँ, आप सब लोगों का आभारी हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. Servo डालो, जान डालो. Servo, a range of world-class lubricants from Indian Oil. कैंपेन मिलेगा, टीवीसी मिलेगा, प्रिंट मिलेगा,
आउटडोर मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, मोबाइल मिलेगा, एडवर्टाइजिंग का A to Z मिलेगा, शाहरुख मिलेगा, सचिन मिलेगा, ब्रांड एम्बेसडर से लेके ब्रांड मैनेजर मिलेगा, मार्केटिंग से लेके क्रिएटिव, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और इन सब पे भारी कंज्यूमर का रिएक्शन भी मिलेगा। एक लाइन में कहें तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग वर्ल्ड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा, पूरा 360 डिग्री। किधर? इधर, सिर्फ ब्रांड बाजार पर। CNBC आवाज, वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा। Introducing the all-new Nano Twist. It's beautiful. Ash brown. It's so elegant. Ash brown. It's charismatic. Ash brown. Ashbra Diamond Jewelry, a reflection of your emotions. Ash brown. NSE and CNBC TV 18 proudly present Investothon 2014. Presented by National Stock Exchange. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation. Diamond Jewelry of the Year Bridal, and this again is going to be showcased in a small little fashion show for you. The nominees for the best Diamond Jewelry of the Year Bridal are Anmol Jewelers, Mumbai. Sri Raj Mahal Jewelers Limited, New Delhi. Tekamdas Motiram Jewelers Private Limited, Mumbai. Birdhishan Kancham Das, Jaipur. Sri Raj Mahal Jewelers Limited, New Delhi. Thank you, ladies, and to present the award, may I call upon Mr. Themas Sprinter of IGI, Mr. Paresh Shah of PNS, and Mr. Anand Mahapralkar. And the winner is? And the winner is Tekamdas Motiram Jewelers. हमारा अगला अवार्ड है बेस्ट डायमंड ज्वेलरी ऑफ द ईयर इन वोग। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं मिस्टर मनीष जैन, मिस्टर अशोक बराडिया एंड मिस्टर अनिल वाघलकर। Let's very quickly take a look at the nominees. And the winner is Sri Raj Mahal Jewelers Limited, Delhi. Now we very quickly move on to our last award for this evening, the best diamond jewelry of the year. और इस अवार्ड को
घोषित और प्रेजेंट करने के लिए वी लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस्टर समित भट्टा, डायरेक्टर एंड एसोसिएट पब्लिशर द रिटेल ज्वेलर, Mr. Pratap Kamath and Mr. Hasmukh Kakadia of Sheetal. we'll quickly take a look at the nominees. और इस फाइनल अवार्ड के विजेता हैं The winner is Jewels Emporium, Jaipur. Ladies and gentlemen, that is our final award for the evening. 31 fabulous awards have been won this evening. Focus. Ideate. Innovate. Enable. Organized by All India Gems and Jewelry Trade Federation.